Okay. See. Yeah. Hi everyone. So I don't know आवाज आ रही है या नहीं आ रही है because there is no one watching me right now. So what I am doing here, and before going ahead, if you're watching it after months or years when I have some following and I am people know me. So a quick story that it's been 1 year I started creating content, no growth, did so many mistakes, had so many misbeliefs, had so many mental blocks. But when I started, now it's here, like it's January 2024, and I started again. What I'm doing now, what's different? That I record my whole day. My strategy would be that on Instagram, I will upload my whole day, what I'm doing, what I'm learning. I had so many issues with niche things. What's my niche? So I came up with this thing, experimenting with it, testing with it. So इस पूरे जो मेरा schedule है, I have made even a complete schedule of mine. This is what I'm going to follow. Okay, I will read it out because I'm interested so much in this thing. I will tell you. 10 to 11, I will just, I will start my day at 10, where I will meditate. मेडिटेट के अलावा एक एक पूजा होती है, शिव मानस पूजा, जो कि मन की पूजा होती है. मन की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है हमारे सनातन धर्म में. कहा जाता है कि शिव मानस में भी है कि मेरा शरीर जो है, मेरा अंतर्मन जो है, जब मैं आंखें बंद करता हूँ, वही भगवान शिव का मंदिर है. यानी कि मैं ही भगवान शिव का मंदिर हूँ, यानी कि मुझ में ही शिव बसते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल बात है जो मुझे बहुत सुंदर लगी. और इसलिए अभी लेकिन मैं शिव मानस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका उच्चारण मैं सही रूप से नहीं कर पाता हूँ. बट आई हैव स्टार्टेड लर्निंग दिस थिंग. उससे सही रूप से मैं उच्चारण करूँ. ओके. सो अभी बस मैं मेडिटेट करता हूँ और फिर उसके बाद अपना डे स्टार्ट करता हूँ. फिर 11 to 2 आई गिव माई सेल्फ राइटिंग. आई राइट. बेसिकली क्या लिख रहा होता, जो मेरा लिंक्डइन और ट्विटर है, वहां पर मैं बहुत नीश स्पेसिफिक कंटेंट डाल रहा हूँ. बेसिकली होता क्या है कि लोग रीपर्पज ही कर रहे होते हैं. मेरा लिंक्डइन और ट्विटर नीश है, बिल्कुल एकदम नीश. क्या है उसमें मेरा नीश? बेसिकली राइटिंग ईमेल्स, जो कि मेरा एक अर्निंग सोर्स बन रहा होगा, जो मैं लोगों के लिए राइटिंग ईमेल्स लिख रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम गुड एट कॉपी राइटिंग, राइटिंग स्टफ एंड मार्केटिंग. सो आई चोज दैट. तो वो ट्विटर और लिंक्डइन पे सिर्फ वही उसी प्रकार का कंटेंट डल रहा होगा. नॉट जस्ट कॉपी राइटिंग, इट्स एक्चुअली घोस्ट राइटिंग. तो इसी के साथ साथ मैं समझा देता हूँ कि घोस्ट राइटिंग क्या होता है. कॉपी राइटिंग बेसिकली यू राइट वर्ड्स दैट सेल. तुम ईमेल्स लिखते हो, नॉट जस्ट सेल की. अगर ईमेल्स फॉर एग्जांपल आपका कोई वेबिनार है, कोई कोचिंग है, कोई कोर्स है, उसके लिए ईमेल्स लिखने के लिए यू हायर कॉपी राइटर. घोस्ट राइटर इज समवन हु copy your tone, who become your ghost. It means he will actually write like you. जिस तरीके से आपकी टोन है, जिस तरीके से आपका स्टाइल है, वो उसी स्टाइल को, उसी टोन को फॉलो करके लिखेगा. So this is an interesting concept, and this is actually new. Not that you will find a lot of good copywriters, but you will not find good ghost writers. And the thing is, it's actually easy. If you are a good copywriter, you can easily become a good ghostwriter. That's what I think. So I am, going all in into this ghostwriting thing, just for two platforms, that is Twitter and LinkedIn. My YouTube is about learning how to write. But now, as you see, that I am actually on live and teaching you. And just this is actually a reading session where I will read Naval and I'll tell you according to my schedule. So okay, so that's where on my YouTube channel, not just writing, I share everything, whatever comes to my mind, I just share it. On Instagram, I share my whole day. On YouTube, I share my whole day plus weekly, completely educational videos on writing. So this is my plan. Okay, and after my writing and research, and after uploading on content on LinkedIn, after uploading my content on LinkedIn and Twitter. Wait a minute, guys. Hmm. क्लास है बाद में. So sorry, that was my father. क्योंकि खाना लेके आए थे एंड हम बाद में खाएंगे. मैं बाद में खाऊंगा. हम क्या होता है कि हाँ. सो 11 से 2 तक मेरा वो टाइम रहेगा. 2 से 3 तक आई लाइक टू वॉक.
मुझे मतलब कि पूरे दिन में आई जस्ट वांट टू गो आउट एंड वॉक। गर्मियों में तो नहीं, मतलब गर्मियों में ऑफ कोर्स रात को ही, बट सर्दियों में आई जस्ट लाइक टू हैव अ वॉक एंड धूप सेकना, जिसको हम कहते हैं कि धूप सेकना बहुत पसंद है, वहाँ पार्क में जा करके स्पेसिफिकली। सो जब वो 2 से 3 का मेरा टाइम होता है तो आई लिसन पॉडकास्ट, एंड दीज डेज आई एम जस्ट लिसनिंग ओशो। इफ यू नो ओशो, यू कैन रिलेट दैट वो कितना माइंड ब्लोइंग होता है, और कितना मतलब कि तुमको हिला के रख देता है कि चीजें जो आसपास तुमने देखी है तुम हर चीज को क्वेश्चन करने लगते हो। जो क्वेश्चन तुमने आज तक पूछे नहीं, पूछने चाहिए थे, तुम वो क्वेश्चन करने लगते हो जब तुम ओशो को सुनते हो। तो कुछ इसी प्रकार का जब मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद जब मैंने ये सोचा कि जब मैं अपने डे को इंक्लूड करूंगा तो ये सेगमेंट तो जरूर इंक्लूड करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं हर रोज कुछ ना कुछ बता रहा हूँ कि मैंने आज ओशो से क्या सीखा। तो अगर आप ओशो को सुनते हैं, आप उससे डिसएग्री करेंगे, मेरा तो ये मानना है काफी चीजों पर, बट मैं कहता हूँ अग्री या डिसएग्री ना करें, उसे समझने की कोशिश करें, वो असल में मुश्किल काम है ओशो को समझना। क्योंकि डिसएग्री और अग्रीमेंट में रह गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं पाओगे उसके असली आइडिया को। ये मेरा कहना है अब तक जितना मैंने ओशो को सुना है। सो ब्यूटीफुल थिंग, एंड नॉट जस्ट ओशो, हो सकता है मैं आगे फिर किसी और का पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, जो भी होगा देन आई विल शेयर के बट आई लर्न। 3 to 4 is my lunch time and checking out on social media, और मतलब मेरा जो लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम की क्या चल रहा है। Now 4 to 7. So right now it's 4:33. Okay, yeah, it's 4:33, and this is a reading session. These days I am reading Naval. So मैंने सोचा नहीं था, अभी ये फर्स्ट डे ही है। This is the first day, guys. I have not been following it for months. This is my complete first day. मतलब पहला 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 दिन। I tried to do it. How was my experience? You may ask. You said it was your first day. How was your experience? I have not even uploaded a reel because वो जो पूरा दिन है मैं वो रील में दिखा रहूंगा, उसी को लॉन्ग फॉर्मेट में यूट्यूब वीडियो भी डाल रहूंगा। बट अभी तक कुछ डाला नहीं है बिकॉज इट जस्ट फर्स्ट डे एंड डे इज गोइंग ऑन। मे बी कल वीडियो डल रही हो आज के दिन की। सो हाउ इज गोइंग माय डे? गुड। द थिंग इज, जब मेरे दिमाग में आया कि मैं अपना डे दिखाऊंगा, बिकॉज अगेन यहाँ पे एक और सोशल मीडिया की चीज सीख लो इफ यू आर वॉचिंग इट, और जब भी तुम देख रहे हो, तो अभी जो प्रोडक्शंस हैं या फिर जो समझ में आ रहा है, वो ये समझ आ रहा है कि लोगों को वो हाइपर एडिटिंग, रिटेंशन एडिटिंग इतना पसंद नहीं। जो हमने देखा है कि एनिमेशन हो रही है, ये चीजें हो रही है, ये चलती रहेंगी, ये हमेशा रहेंगी, बट पीपल लाइक मोर रॉ एंड रियल कंटेंट। फॉर एग्जांपल यू एंड मी राइट नाउ, आई एम लाइव टॉकिंग टू नो वन, एक्चुअली टॉकिंग टू माय कैमरा, बिकॉज़ नो वन इज वाचिंग मी राइट नाउ ऑन दिस लाइव। But yeah, for example, you're watching me right now, so it's a complete raw and real conversation. And of course, I don't have any fancy equipment, so my camera quality is not that good. I'm speaking on, मतलब कि मैं एक ही बार में बोल रहा हूँ, there is no script, which is real and raw. So that's what people like. People want to see that content more. People don't want to see that hyper edits, fancy edited. People don't want to be tricked. And how do you trick them? By your retention editing. I'm not against it, बट द थिंग इज, जब पिछले साल क्या हुआ था, बड़ा ये ना फनी सा किस्सा है, बड़ी फनी सी बात है। क्यों? पिछले साल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं लॉन्ग फॉर्म करना चाहता था, बट सबने कहा कि लॉन्ग फॉर्म में कुछ ग्रोथ नहीं है, शॉर्ट फॉर्म से करो। अब यार पता है क्या दिक्कत थी कि मुझे शॉर्ट फॉर्म में 1 मिनट में कुछ चीज समझाने नहीं आती थी। अभी भी मैंने ये जो किया है ना, ये मैं 1 मिनट में भी डे दिखाऊंगा और इसी डे को मैं आधे घंटे 25-30 मिनट में भी दिखाऊंगा। सो बट अब इतना इतना सीख गया हूं कि 1 मिनट में जल्दी 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 भी नहीं, मतलब जल्दी भी और आराम से भी, मतलब वो चीज को जो तुम सिंपली एक लाइन में जो तुम बोल सकते हो, इतनी चीज है उसको एक लाइन में, वो एक स्किल थी जो मुझे लगता, मुझे थोड़ा पसंद ही नहीं था कि एक लाइन में क्यों समझाऊं, मुझे समझना ही इतने में है। तो बट जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, आई थिंक जो शॉर्ट फॉर्म की ऑडियंस है, वो ज्यादा वैल्यू मेरे ख्याल नहीं है, मेरे को स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस होती है, दे डोंट वांट वैल्यू। मतलब वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कैसे कर रहे होते, थिंक अबाउट देयर फिजिकल पोजीशन व्हेन दे आर स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम। कहीं लेटे होते हैं, बसेस में होते हैं, मेट्रोज में होते हैं, दे जस्ट सेव द वीडियो कि कल देखेंगे अगर वैल्यूएबल है तो। वो तो वही है, मतलब थोड़ा सा वैसा वाला गेम है, बट आई ट्राई टू मेक इट वैल्यूएबल एज वेल एज इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। अभी ट्राई कर रहा हूँ, मतलब दिस इज द फर्स्ट डे। अब इसके बाद जब पोस्ट जाएगा, देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है, एंड आई विल शेयर द इनसाइट्स। बट या कमिंग बैक टू द स्टोरी, when I started, everyone told me कि shorts बनाओ. So I thought okay, but again I had problem in just 1 minute के 1 मिनट में समझाऊं कैसे। So हुआ नहीं इतना अच्छा। चलो होने लगा, फिर मेरा जो दोस्त था वो कहता कि your edits are not good, you should learn to edit. And this was like I hate editing. I mean I I hated editing यार, मुझे पसंद ही नहीं आता कि एडिटिंग
क्या है क्या नहीं, उस समय नहीं आता था। तो मैंने सीखना शुरू करा, और अब 1 साल बाद मेरे को मतलब इतना आ गया एडिट करना अच्छे से, लाइक आई edit motion graphics. I also can animate few things, and ठीक ठाक आ गया है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल और शॉर्ट्स कर सकता हूँ। एंड and now it's funny to see that people are switching to real and raw content. तो इससे मुझे क्या सीखने को मिला कि कोई भी चीज है, वी वांट टू गेट स्टार्टेड, स्टार्ट हो जाओ। इवन इफ यू, मेरे लिए कि इवन इफ आई डिडंट नो एडिटिंग, आई शुड हैव स्टार्टेड। तो यहां से सीखने को मिला, कोई भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना मैसेज पहुंचाना, अपनी वर्थ दिखाना, कुछ शेयर आइडियाज करना, इनसाइट शेयर करना। अब ये मेन चीज है, ये मेरी थी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए था, मैं इस चीज को शेयर करूं। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव था अच्छा दिखना, कंटेंट अच्छा जाए, ये जाए। अगर मैं उस समय इस चीज को समझ लेता, तब तक मैं मतलब काफी इंप्रूव कर चुका होता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉलोवर्स, बिकॉज आई डोंट नो फॉलोवर्स थिंग। तो ऐसा है कि तुम्हें टेस्ट करके पता चलता है कि क्या चीज वर्क करी और क्या चीज वर्क नहीं करी। सिमिलरली, बट हाँ, ग्रोथ किस चीज की हो रही थी, मेरे बोलने की स्किल की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती, आर्टिकुलेट में और ज्यादा हो जाता, वर्ड्स को यूज करना और अच्छे से आ जाता, स्टोरीज टेल करने में और इंप्रूवमेंट हो जाती। सो व्हाट यू कैन टेक अवे इज जस्ट स्टार्ट। इफ एनीथिंग इज स्टॉपिंग यू, कट दैट थिंग ऑफ, उसको हटा ही दो। ओके, ओके, सो दिस वाज द थिंग, सो यू गेट इट। तो अभी क्या हुआ, जब मैं रीडिंग करने बैठा, मुझे लगा अभी का टाइम, लाइक अभी 12 मिनट पहले, इस लाइव को 12 मिनट हो गए, मैंने सोचा दैट आई शुड do na live while I'm reading. No one is watching, but it will be record यहाँ रहेगा कि I read for 2 hours or 2.5 hours. I need this record. I need this record here. I need this record. So again, hello everyone. So you heard my story. If you're watching this live after it, or if you're not even watching it, this is just for myself. ओके गाइस, सो अब ये जो टाइम है, ये रीडिंग का टाइम हो रहा होगा। तो जब भी मैं रीड करता हूँ, एक हम रीडिंग देख लेते हैं, रीडिंग कैसे करनी चाहिए। आज थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूँ ताकि कुछ चीजें समझाने के लिए, और हो सकता है मैं एक दिन में थोड़े ज्यादा बार भी लाइव आऊँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे राइटिंग सेशन में शायद मैं ना आऊँ, क्योंकि इस टाइम मैं बोलना कम पसंद करता हूँ, मैं सोचना ज्यादा और पेपर पे लिखना ज्यादा। बट इस समय रीडिंग के टाइम में थोड़ा आउट लाउड ही रीड कर रहा होता हूँ बहुत सारी चीजें, और बीच-बीच में कुछ-कुछ दिमाग पे क्लिक होता था, वो शेयर भी करने का मन करता है, तो वो भी मैं शेयर कर रहा होता हूँ। ओके गाइस, सो मैं आज थोड़ा-सा ब्रीफ दे देता हूँ दैट हाउ शुड समवन रीड एंड हाउ आई रीड। ओके, नंबर 1, consuming information is not learning. Oh, sorry. Again, I'll do it again. Exposure to the information is not learning. Executing the information is. What it means? It means when you read 10 books, suppose you read 10 books, but you didn't take any action, there is no use of doing this thing. Suppose you read one book, forget about it. Suppose you read one chapter and you took action. It means you executed what you read in that chapter. Your life will be changed. Your life will be changed. I guarantee. If it is a good book, if it is a good lesson, and you go and execute that lesson in your life, of course, execution takes time. But if you execute it, your life will be changed. So whenever I study, I always write these execution steps. I don't know if you can read it or not. Execution steps. I write कि जो भी मैंने पढ़ा है, मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। कुछ चीजें जाती है बहुत लॉन्ग टर्म की। फॉर एग्जांपल, इस किताब पढ़ते हुए सबसे पहले आया मेरा जो एग्जीक्यूशन स्टेप कि ओन इक्विटी, अ पीस ऑफ बिजनेस। तो यानी कि इक्विटी, अभी मैं उस स्टेज पे, मुझे लगता है कि मैं अभी ओन इक्विटी कर रहा हूँगा। बट हाँ, आई विल डू इट। सो आई हैव रिटन इट एंड आई कीप दिस एग्जीक्यूशन स्टेप्स विद माई सेल्फ। ओके, सो ये चीज करनी है आपको, एग्जीक्यूशन स्टेप्स हमेशा बनाने हैं, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, सॉरी, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, आपको एक एग्जीक्यूशन स्टेप हमेशा हमेशा बनाना है। ओके, एंड अनदर थिंग इज हाउ टू रीड अ बुक। सपोज यू यू पिक्ड अ बुक, तुमने एक किताब ली और उसको तुमने पढ़ना शुरू करा। अब तुम्हें उसे पढ़ते ही नहीं जाना है, या फिर तुम्हारा गोल उस किताब को कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए। सपोज वो किताब बोरिंग है, तुमको नाउ इट्स द बुक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रैब योर अटेंशन। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू
स्टे फोकस्ड। ऑफ कोर्स तुमको फोकस रहना चाहिए कि जो भी चीज फोकस रह के ही होगा, बट फॉर एग्जांपल यू आर फोकस्ड बट वो मजा नहीं आ रहा है, तो एकदम से किताब छोड़ो मत, कम से कम 15-20 पन्ने, उसको नहीं आ रहा मजा तो पलटते जाओ पन्ने, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। सपोज करते हैं कि 15वें पन्ने पर 15th पेज पर क्यूरियोसिटी थोड़ी सी पीक होती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है, या एक लाइन तुमको अपनी तरफ खींच लेती है और तुम पढ़ने लग जाते हो, दैट्स द गेम। फॉरगेट अबाउट दैट 15 चैप्टर्स, नो वन केयर्स। तुम्हारी क्यूरियोसिटी वहां इंटरेस्ट आने लगा, वहां से पढ़ना स्टार्ट करा। अब सपोज करते हैं 15वां पन्ना तुमने पढ़ा, और अब वो 15वां पन्ना इंटरेस्टिंग था, तुमको बहुत, तुम्हारी क्यूरियोसिटी भी बहुत बढ़ गई, लेकिन वो पूरा पन्ना पढ़ करके अब तुम्हारे दिमाग में ना आइडियाज आ रहे हैं कुछ, या फिर अपनी लाइफ की स्टोरीज याद आ रही हैं, या फिर कुछ सोच रहे हो कि मैं ना ये करूंगा यार, ये मेरे साथ होता है, ये चीज मैं कल करूंगा, ये अब करूंगा, या किसी और इंसान के बारे में सोचो, हाँ यार ये उस बंदे ने कहा था, ऐसे फलाने फलाने आइडियाज, थॉट प्रोसेसेस, स्टोरी, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, व्हाट यू नीड टू डू माय फ्रेंड, 16वें पन्ने पे अब नहीं जाना है, यू गॉट इट, टेक पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। दैट्स द गेम, दैट्स द गेम यू शुड प्ले, बिकॉज अगर वो दिमाग में आ रहा है, इट मीन्स यू हैव समथिंग टू शेयर, वो आ रहा है उसको लिखो, यू विल हैव समथिंग टू शेयर टू द वर्ल्ड, टू योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट, उसको फॉलो करके आपकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, चेंज आता है, तो ऑफकोर्स वो लोगों की लाइफ में भी किसी दिन आएगा ही आएगा, एंड इफ यू शेयर दैट थिंग विद समवन, तो उनकी भी लाइफ बेटर होगी। दैट्स हाउ यू बिकम अ थॉट लीडर। who is the thought leader? Basically who have ideas to share with the world, which are different, which are different and yet simple, easy to follow and realistic। वो वाली आइडल टॉक चैट नहीं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और वो सिंपल एंड इजी टू डू क्यों होगी, क्योंकि तुमने करी है। सो यू विल प्रोवाइड अ कंप्लीट फ्रेमवर्क दैट दिस इज हाउ आई डिड इट। फॉर एग्जांपल, why I am doing this day thing meaning why I am recording my day and why I am live when no one is watching me, because I learned this thing, be a synthesizer. What is synthesizer? Synthesizer is someone who consumes content, who reads books, who listen podcasts and share their stories, practice it, execute it, and share insights and ideas and new frameworks, new roadmaps, and earn money by doing it. That person is called synthesizer. When I read about it, I was like, this is me. I took pen and paper and started writing that, am I even a synthesizer or not? So yes, I think I am, and everyone should be. Now, coming back to the book. Now I am reading the book. मैं हमेशा से बोलता ही रहूंगा, मैं रीड कर रहा हूँ तो मतलब बहुत ही नेचुरल होगा। आई डोंट वांट कि अगर लाइव है तो जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ वो चीज चेंज हो जाए। अब तक मैं 18 मिनट से बोल रहा हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए कि क्या मैं करता हूँ और ये लाइव किस बारे में होगा और आने वाले लाइव कैसे होंगे। शुरू में मैं कल से एक इंट्रोडक्शन छोटा सा तैयार कर लूंगा, जिसके अंदर जब भी मैं लाइव आऊंगा तो मैं बता दूंगा कि भी ये चीज है और मैं कब कब लाइव आ रहा हूँ। लेट्स सी यार, कब कब आ रहा हूँ मैं लाइव। आई थिंक ये रीडिंग टाइम तो मैं आ रहा हूँ 3 से 6 आई थिंक। ऑफकोर्स 7 भी बज सकते, मैंने यहाँ 7 लिखा है तो, बट लेकिन लाइव में 3 से 6 रहूंगा। आई विल टेल यू द रीजन लेटर। एंड ओके, 7 से 9 एंड 7 to 9 मेरा ट्यूशन होता है, मतलब मैं ट्यूशन नहीं जाता, आई गिव ट्यूशन क्लासेस टू द 12th क्लास स्टूडेंट्स। 9 to 10 I go for running। 11 to 12:30 will be, हाँ 11 to 12:30 आ सकता हूँ, बट या आई थिंक आई वॉन्ट बी, आई डोंट नो। 11 to 12:30 मेरा टाइम होता है जहाँ पे मैं लिंक्डइन और ट्विटर पर जा करके कमेंट्स कर रहा होता हूँ, विच इज अ कमेंट स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई वांट टू ग्रो ऑन लिंक्डइन एंड ट्विटर। सो अब वो बहुत सारे पोस्ट जो होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उनके बारे में बात हो सकती है, थोड़ा रोस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि वो मैं फोन में करता हूँ, क्योंकि मैं फोन में करूंगा तो फिर मैं कैमरा किससे ऑन करूंगा, मतलब वेब कैम अभी मेरा फोन ही है। दैट इज द प्रॉब्लम। आई थिंक आई विल फिगर इट आउट, तो हम रात को भी एक बार लाइव आ सकते हैं 1.5-2 घंटे के लिए। ओके, या 1 से 4 तक के टाइम में मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस पे काम करता हूँ, जो लॉन्ग वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस हो गई, उनको कैसे तैयार करना है, लाइक थंबनेल क्रिएशंस, टाइटल्स, आइडिएशंस, स्क्रिप्टिंग एंड ऑल।
सो लेट्स सी, बट ये वाला टाइम पक्का इस डेली लाइफ होने वाला है। ओके गाइस, सो लेट्स रीड। तो मैं बुक दिखा देता हूँ कौन सी पढ़ रहा हूँ एक बारी। आई थिंक काफी लोगों ने पढ़ रखी हो, मैंने सबने मुझे सजेस्ट बहुत सालों से किया, मतलब शुरुआत से जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी कि यू शुड रीड इट, बट आई हैव नॉट read it, and you know that I really love books. I really love books. I was not good at reading, but I was good at buying the books. Now the reason is because of my childhood. My father, you know, is a massive reader. He reads a lot of books. अब उन्होंने पढ़ना थोड़ा कम कर दिया है, बट मैंने बचपन से देखा उनको रात को किताबें पढ़ते हुए, और ओशो को भी वो पढ़ते थे। तो ऐसे शुरू से मेरे को किताबें खरीदने का शौक रहा है, तो व्हेनेवर न्यू बुक कम्स आउट मैं हमेशा खरीद लेता था। बट अब मैंने रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी बना ली है, तो जितनी पीछे आप बुक्स देख रही हैं, इनमें से मैंने काफ़ी पढ़ ही ली है, मतलब वैसे ही पढ़ी है जैसे मैंने तुमको बताया ना, टक, 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 जो क्यूरियोसिटी जहाँ पीक कर रही। एंड देयर इज़ अनदर थिंग, कि एक और रीज़न है बुक्स को खरीदने का, कि जब भी जैसे मैं फाइनेंस की बुक रखता हूँ, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग और हर चीज़ की, हर टॉपिक की, जो मुझे लगता है कि एक मेरे पास कुकिंग की कोई बुक नहीं है। आई वांट टू बाय अ कुकिंग बुक। आई थिंक इट्स बाय राधि शेट्टी, दैट आई रियली वांट टू बाय हर बुक। इट्स अबाउट कुकिंग एंड न्यूट्रिशन, इज शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो उससे रिलेटेड है वो। इसलिए कि कभी भी ज़रूरत पड़े, मैं हूँ कभी भी किसी की लाइफ में जहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, या बिजनेस या मार्केटिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ मुझे लग रहा हो कि प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूँ क्या ना करूँ, सो उस समय मेरे पास वो किताब हो, मुझे पता हो कि मेरा आंसर ना इस किताब में पक्का मिलेगा, या फिर डायरेक्ट आंसर नहीं तो कुछ ना कुछ तो कॉन्टेक्स्ट जरूर मिलेगा। सो आई विल सर्च इट, आई विल गो एंड रीड दैट, फॉर एग्जांपल दिस बुक। हालांकि ये बुक मैंने किसी से बोरो करी है, बट जब मैंने सिंथेसाइजर के बारे में पढ़ा तो नवल रविकांत सेज द सेम थिंग। जब मुझे ये पता चला, सो आई टुक द बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग, दैट्स द थिंग। ओके, सो मैं पढ़ रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शायद बोल रहा हूँ, बीच बीच में कोई कमेंट्स होगा, आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई थिंक। ओके, लेट्स स्टार्ट। Arm yourself with specific knowledge, accountability, and leverage. Specific knowledge is the knowledge you cannot be trained for. Practice and arm yourself with specific knowledge. Arm yourself with specific knowledge. Okay. Now what is the specific knowledge? मुझे इसके बारे में पता है, बिकॉज नवल ये किताब पढ़ने से पहले मुझे पता था कि नवल ऑलवेज टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक नॉलेज। बेसिकली नवल सेज कि जो तुम कॉलेज जाके पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, वो हजारों बच्चे सीख रहे हैं, और अगर वो कॉलेज वाले तुमको सिखा सकते हैं, देन कंप्यूटर आल्सो कैन लर्न दिस थिंग। इसका कहने का मतलब है कि वो मतलब तुम्हारे बिना भी एक दिन वो काम हो सकता है। हालांकि ये बात आपको अभी अब डिसएग्री कर रही होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी वाली बात होगी, एआई विल टेक जॉब्स एंड ऑल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट इसकी हम गहराई को समझते हैं, व्हाई नवल इज सेइंग इट। नवल सेज बिकॉज स्पेसिफिक नॉलेज इज अ नॉलेज यू कैनॉट बी ट्रेन्ड फॉर। इफ सोसाइटी कैन ट्रेन यू, इट कैन ट्रेन समवन एल्स एंड रिप्लेस यू। बेसिकली अगर वो तुमको ये ट्रेन कर सकते हैं, वो जो कॉलेज है या टीचर्स हैं, सोसाइटी है, वो किसी और को भी कर सकते हैं, और उसे करके वो तुम्हें रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो तुम ट्रेन नहीं हो सकते। स्पेसिफिक नॉलेज कांट बी टॉट, इट कैन बी लर्न। सिखाई नहीं जा सकती, बट सीखी जा सकती है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि जब मैं ऐसे पढ़ता हूँ, सो कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में बहुत क्लिक होता है कि ना इसका हिंदी अनुवाद कितना अच्छा लग रहा है, नहीं हिंदी ट्रांसलेशन, कि सिखाई नहीं जा सकती बट सीखी जा सकती है स्पेशल नॉलेज। अब स्पेशल नॉलेज होता क्या है, इसके अंदर देखते हैं अगर लिखा है तो,
Building specific knowledge will feel like a play to you, will look like work to others. Okay. हम्म। ओके। पहले मैं जो नवल ने यहाँ पर लिखे हैं कोट्स, ये इनका ट्वीट्स क्या है, बुक के अंदर उनका ट्वीट्स दे रखे हैं, हम उसको समझते हैं स्पेसिफिक नॉलेज का। स्पेसिफिक नॉलेज इज फाउंड बाय परसुइंग योर जेन्युइन सॉरी, specific knowledge is knowledge you cannot be trained for. If society can train you, it can train someone else and replace you. That's what अभी हमने इसके बारे में बात करी. Now this is important guys. Specific knowledge is found by pursuing your genuine curiosity and passion. तो क्या आ जाता है, pursue your genuine curiosity and passion rather than whatever is hot. Okay, whatever is hot right now. दो तीन चीजें की बात, पहले क्रियोसिटी की बात करते हैं, परसुइंग योर जेन्युइन क्रियोसिटी। अब ये क्वेश्चन बोलना तो चलो, एक हम ना थर्ड हम ऐसे देखते हैं इसको कि सामने से कोई हमको बोल रहा है, फॉर एग्जांपल नवल ही बोल रहे हैं, नवल, हाँ, नवल ही बोल रहे हैं, नवल बोल रहे हैं कि परस्यू योर जेन्युइन क्रियोसिटी, बट द क्वेश्चन इज आई डोंट नो हाउ टू फाइंड माय जेन्युइन क्रियोसिटी। मैं कैसे अपनी क्रियोसिटी को ढूंढूं, समझूं? मुझे नहीं पता व्हाट आई लाइक टू डू, मुझे नहीं पता मुझे स्वाद कहाँ आता है, मजा कहाँ आता है, आई डोंट नो। ये लोग कहते हैं, यही मैंने खुद को कहा था जब मैंने ये चीज पढ़ी थी। हालांकि बुक मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, बट नवल के पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, नवल के कुछ आर्टिकल्स वगैरह ऐसा पढ़ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ये क्या चीज है स्पेसिफिक नॉलेज। और मैंने भी खुद से ये क्वेश्चन करा के भी आई डोंट नो, एंड मेनी पीपल डोंट नो दे व्हाट देयर क्यूरियोसिटी इज। इट्स नॉट लाइक कि दे डोंट, कि उनको उनको अगर तुम कहोगे परस्यू जेन्युइन क्यूरियोसिटी, दे डोंट नो क्यूरियोसिटी। व्हाट्स माय क्यूरियोसिटी, यहाँ लिखा गया है कि उसे फॉलो मत करो जो भी हॉट है। हॉट है यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एआई, चैट जीपीटी जैसे आया, सब एआई एक्सपर्ट बन गए, एआई गाय बन गए, सबने अपनी बायो में लिख लिया एआई गाय, एआई एक्सपर्ट, या यूजिंग यू नो व्हाट आई मीन। सिमिलरली सिमिलरली तो वो हॉट जो होता है उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इस एज में, जिस एज में मैं हूँ, आई एम 21, तो उस एज में लगता है कि मनी इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? सो वी गो आफ्टर मनी। सो वहीं पे हमको नवल से, जब हम ऐसे जाते हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसी रास्ते पे हमको नवल से मुलाकात होगी बिकॉज नवल टॉक्स अबाउट वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप एक्सटेंसिवली। सो बड़ी ही मजेदार चीज है वो। तो उस पे आप सपोज करो, आप पैसा कमाने की राह पे निकले और तुमको नवल मिल गए, और नवल यानी नवल की किताबें, नवल का पॉडकास्ट, और वहां पर तुमको ये जानने को मिलता है कि अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी क्या है। सो वी असल में नवल इसके बारे में क्या बात करते हैं कि तुम ऐसी चीज ढूंढो जो तुम बचपन से करना करना पसंद करते हो या देखना पसंद करते हो, वहीं कहीं ना कहीं तुम्हारी क्यूरियोसिटी जो है तुम्हारे बचपन में छिपी हुई है। एंड डैम, आई मीन, बैठ के सोचना पड़ेगा या फिर घर वालों से बात करनी पड़ेगी, पापा या मम्मी से बात करनी पड़ेगी कि व्हाट आई वाज इनटू एज अ किड, किन चीजों में था मैं व्हेन आई वाज अ किड। मैंने बहुत सोचा, मैं अपनी बात करता हूँ फिर बताऊंगा कि हाउ यू कैन डू इट टू। एंड आई फाउंड आउट कि व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड आई रोट अ स्टोरी ऑन डायरी। नो, वो डायरी खरीदने का बड़ा एक ट्रेंड सा चला था, तो मैंने डायरी खरीद ली एंड आई रोट अ कंप्लीट स्टोरी ऑन ऑन अ बॉय, ही वाज इन विलेज। मुझे पूरी स्टोरी नहीं याद, बट ये याद है थोड़ा सा, मतलब शायद कार्टून से इंस्पायर्ड होऊंगा मैं, कि ही वाज अ बॉय नॉटी, मतलब बहुत परेशान करता था, बट ही मेट लॉर्ड कृष्ण इन दैट विलेज। और विलेज में कोई भी नहीं है, जो एक याद है जो मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला जितना याद है
कि वो उनसे मिलता है, उस समय गाँव में कोई होता नहीं है, बट वो होते हैं, वो लड़का होता है और लॉर्ड कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण होते हैं, छोटे वाले कृष्ण जो हमने देखा था। तो कहीं न कहीं वो कार्टून से इंस्पिरेशन लेके मैंने लिखा होगा। पूरी स्टोरी मुझे नहीं याद, बट ये थोड़ी-सी धुंधला याद है। फिर उसके बाद इन इन माय 10th स्टैंडर्ड आई रोट अ हिंदी पोएट्री। मेरे एग्ज़ाम्स के डेज़ थे एंड आई रोट अ कंप्लीट पोएट्री इन हिंदी। आई मीन आउट ऑफ नोवेयर अपने आप ही पेजेस के एंड में मैं लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि इंग्लिश का पेपर था शायद, हाँ, और मैं हिंदी पोएट्री लिख रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगा आई शुड डू दिस एंड आई हैड अ गर्लफ्रेंड। शी ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज़ वन डे एक एक ऑथर है, जिन बुक का नाम मुझे याद है, पिलो थॉट। तो मैंने उनका उनकी बुक ली, उनमें से मेरे को बड़ा अच्छा लगा उनकी पोएट्री, बड़ी अच्छी लगी पोएट्री, तो मैंने वो लिख के अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाई एंड शी लव्ड इट एंड शी थॉट दैट आई रोट इट। फिर मेरे से मना नहीं करा गया, मैंने कहा हाँ हाँ मैंने ही लिखी है। और दैट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज शी वाज लुकिंग सो हैप्पी, शी वाज लाइक यू आर टैलेंटेड एंड आई वाज लाइक ओके ओके, बिकॉज मुझे पता था ये पोएट्रीज तो पढ़ती नहीं है कोई किताबें ऐसी, तो उसको कभी पता नहीं चलेगा दैट आई हैव नॉट रिटन इट। और ये एक रिचुअल बन गया, ट्रेडिशन बन गया कि हर 2-3-4 दिन बाद मैं ले जाया करता था कुछ लिख करके एंड शी वाज लाइक सो हैप्पी, लाइक शी वाज फाइंडिंग इट सो रोमांटिक enjoyable that I'm writing letters, and not just letters, the words are beautiful. बट आफ्टर लाइक 1 महीना ये चला, बट आफ्टर 1 मंथ आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये तो सब गलत हो रहा है, तो धोखा दे रहे हो, काइंड ऑफ वैसे वाली फीलिंग आने लगी एंड आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। या सो व्हाट आई डिड दैट ऑन दैट डे आई टुक अ पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू राइट इट बाय माय सेल्फ। मैंने अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करी। मैंने किसी की मदद नहीं ली, कोई इंस्पिरेशन नहीं, सिर्फ उसके बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा और लिखा। मैं उसके पास लेके गया। मुझे लगा नाउ शी विल से कि ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। बट सरप्राइजिंगली उसने कहा कि ये इट्स द बेस्ट वन येट, सबसे बेस्ट है ये वाला। मुझे लगा कि इतने टाइम से अच्छा-अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो उन्हीं की छाँव में ये भी अच्छा लग रहा है। सो मेरी एक जूनियर हुआ करती थी, शी वाज़ सो मच इंटू दिस फिक्शन बुक्स एंड पोएट्री बुक्स। मैंने उसे वो दिखाया कि मैंने ये लिखा है। उसको भरोसा नहीं हुआ कि मैंने लिखा है, बिकॉज़ इन स्कूल एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि हम मतलब घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। सो उसको लगा कि ये आपने नहीं लिखा भैया, यू कांट राइट लाइक दिस। एंड आई वाज़ हैप्पी बिकॉज़ इट मीन्स ये अच्छा लिखा है। सो बट आई सेड ओके, मैंने नहीं लिखा, बट ये तो बता कैसा है? एंड शी सेड बहुत बढ़िया है, बट आई तुमने नहीं लिखा है, जिसने भी लिखा है इट्स अमेजिंग। एंड एट द एंड उसको भरोसा हुआ ही नहीं कि मैंने लिखा है एंड आई वाज़ हैप्पी। आई वाज़ फीलिंग लाइक कि भाई साहब मैं तो राइटर बन चुका हूँ। बिकॉज़ आई रोट इट एंड yeah, so after that I didn't copy anything. I wrote it by myself and I started getting better and better and better. So this is the thing. And I made a Instagram page. मैंने वो बाद में डिलीट कर दिया था, लेट नाइट राइटिंग्स, एंड आई थिंक मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था उसको। वो अब तक रहता तो मज़ेदार होती कहानी। और उसके अंदर मैं लिखने लग गया पोएट्रीज। आई हैड लाइक 1000 फॉलोअर्स उस टाइम इन 9th and 10th standard। बट या everyone liked in the school, सबको पता था that I write, everyone knew that I'm in a kind of interesting writer guy, da, da, da. So एक ये पर्सनालिटी जो बन गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्कूल में नाम भी हो गया था। It was great, it was amazing. And after 12th, um, I started my journey into finance, learning about finance, couldn't go to college, lots of things happened that I have shared many times. But now when it comes to curiosity, I see that I was always into the writing thing, writing stories, writing poetries. I was into writing. So अभी भी ये क्यूरियोसिटी है राइटिंग की और बिजनेस की, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर जो देख के लगता है, बिकॉज आई ऑलवेज यू नो लगता है, अभी लगता है, ये लगने का ही तो खेल है, मतलब कि लगता है कि मेरे को अच्छा लगता है, बट राइटिंग इज आई एम श्योर कि दिस इज समथिंग आई वाज इनटू एज अ किड। ये मैं खुद को कहता हूँ। और मैंने ये भी फील करा है कि घूम फिर करके मैं कॉपी मेरे को कॉपी राइटिंग में मैं आया। मुझे कॉपी राइटिंग अच्छी लगने लगी, मुझे स्टोरी टेलिंग अच्छी लगने लगी। स्टोरी टेलिंग को जिस तरीके से मार्केटिंग से जोड़ा जाता है, सॉरी, स्टोरी टेलिंग को जिस तरह मार्केटिंग से जोड़ा जाता है, मुझे वो कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और मुझे दिखा कि इफ आई एम अ गुड स्टोरी टेलर, इफ आई एम अ गुड राइटर एंड इफ आई नो मार्केटिंग एंड सेल्स, आई कैन अर्न गुड मनी एंड आई कैन लिव माय लाइफ, एंड दिस इज माय क्यूरियोसिटी दैट राइटिंग।
So there are two types of writing: fiction and non-fiction. Right now, my whole focus is on writing emails, and other than that, I am trying to learn. Uh, Other than that, I write poetry. Yeah, I have a channel now. I have a YouTube channel as well, but अभी कुछ upload नहीं करा है मैंने ज़्यादा. But Instagram पे मैंने कर रखा है. It's poetic heart. I think वाधवन by वाधवन ऐसे करके. So that's my page also. तो वहाँ पे मैं पोएट्री वाली चीज़ कर रहा होता हूँ. ट्विटर लिंक्डइन पे मैं बिल्कुल मार्केटिंग स्टफ, ईमेल्स लिखना. And right now, like this YouTube channel is all about my synthesizing the information, the learning, and my Instagram is also same as YouTube, but in a shorter form. This is how I am following my curiosity. Now comes to you. So तुम्हें ये देखना है कि तुमको क्या चीज पसंद थी as a kid. And if you didn't know that what you liked as a kid, what you can do, you can let ऐसी कोई ना कोई चीज तो होगी जो तुमको लगता होगा कि हाँ ये मेरी क्यूरियोसिटी. द क्वेश्चन इज कि हमको लगता है कि इसमें वी कांट मेक आवर करियर, वी कांट बी, आई वुड से दिस इज नॉट समथिंग वी शुड परस्यू बिकॉज आसपास जो सोसाइटी है या जो सिस्टम है वो कुछ और कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी गवर्नमेंट जॉब, इट कैन बी business, okay, startup thinking, karna hi karna hai because everyone is doing it. It can be working with your father, working at your father's shop. It can be anything. You have to find that what's there, what's inside there. क्योंकि यहाँ पे अगला क्या लिखा है, when a specific knowledge is uh, building specific knowledge will feel like a play to you but will look like work to others. It means if you follow and pursue your curiosity and then you form your specific knowledge. Now एक थोड़ी specific knowledge पे फिर बात कर लेते हैं कि what is specific knowledge actually. it is it is just that writing, right? For example, I like to write, कि मुझे लगता है ये मेरी genuine curiosity है, but ये specific knowledge नहीं. It is a curiosity, and when I follow the curiosity I will learn that specific knowledge, because not just writing can make me win. Writing plus sales and marketing plus this content creation thing will make me win. This poetry and entertainment thing, and of course, when I say that I like to write, I also want to write like humor and jokes or the stand-up comedy things. So when this will combine, the magic will happen, and that magic is called specific knowledge. And you will go on to get better. And this is an unknown path. This is not a known path. That's why people get scared of this thing. Unknown, yani ki you don't know where you are going. You don't know where you will end. But how we are wired, how most of us are wired, कि इतने टाइम तक जॉब, इतने टाइम के बाद not just job, even if it's business or anything, इतने टाइम तक ये फिर ये फिर ये फिर ये, everything, you want everything planned, you want a known path inside yourself, but it's an unknown path. You don't know where you will end, you don't know where things will end, you never know the next step. But then why people go on a known path? Because there is only one thing which helps them, their curiosity. Even if it's an unknown path, your curiosity leads you. And I guarantee, if you follow your curiosity, you will be happy. That's what happiness is. And of course, you will earn a lot of money too, not just happy. You will earn a lot of money too. But again, it's an unknown path. And coming to the next aspect, when specific knowledge is yeah if, as I read, building specific knowledge will feel like play to you but will look like work to others. Now what it means, it means कि जो अब आप अपनी क्यूरियोसिटी को जब फॉलो कर रहे होंगे उस पाथ पर, तो वो आपके लिए एक प्ले हो जाएगा. प्ले इन द सेंस कि यू वॉन्ट गेट टायर्ड, यू विल लव डूइंग इट, यू विल लाइक डूइंग इट. जो बहुत सुनने में बहुत अच्छा है कि अच्छा ये हो जाएगा कि मैं जो काम करूंगा मैं थकूंगा नहीं होऊंगा. ऑफ कोर्स इट्स लाइक व्हेन यू गो टू प्ले बैडमिंटन फॉर एग्जांपल. जब हम 2-3 घंटा बैडमिंटन खेले थे, यू लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, तो उसमें हमारी बॉडी यूज हो रही होती है, हम थक रहे होते हैं कहीं ना कहीं फिजिकली, लेकिन बट मेंटली वी फील फ्रेश. कि हम 1-2 घंटा खेल के आई फील सो मच फ्रेश, बट असल में तो फिजिकल काम हो रहा है, थकने का काम हो रहा है, बट यू फील फ्रेश. सो इट्स थोड़ी सी आयरनी है, उल्टी बात मालूम पड़ती है कि खेल रहे हैं, फिजिकल थक रहे हैं, बट मेंटली वी आर फीलिंग फ्रेश. You get my idea? Similarly,
जब यही चीज आप अपने वर्क में ले आते हैं तो घंटों घंटों खेलते हैं, शायद आप थक रहे हो लेकिन थका हुआ महसूस नहीं करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्ले। बट इसके साथ एक चीज जो आती है जो काफी लोग समझ नहीं पाते, इवन इफ योर वर्क इज प्ले, इट डजेंट मीन इट्स इजी। सो ये सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग तो है, बट शुरू करना मुश्किल ही होगा। और उस अननोन पाथ पे चलना, अपनी क्यूरियोसिटी को साथी मानकर, उसको लीडर मानकर, अपनी क्यूरियोसिटी को उसके पीछे पीछे जाना, ये आसान नहीं होगा। इट विल बी डिफिकल्ट बट इट विल बी प्ले टू यू। सिमिलरली, क्या आप चाहे आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, या सिंपल गलियों में खेलने वाले हैं, मजा तो आएगा ही दोनों को। राइट, एक दिन अगर आप गलियों में खेल रहे हैं तो आप नेशनल लेवल भी पहुंच जाएंगे, लेकिन मजा खत्म नहीं होगा। वही मजे की बात है कि आप बिगिनर हैं या एडवांस हैं, वो मजा आता रहेगा, यही ब्यूटी है। लेकिन मुश्किल उस नेशनल प्लेयर के लिए भी है, उस जो गलियों में खेल रहा है उसके लिए भी है। तो इस बात को, इस गहराई को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, बिकॉज ये जो चीजें हैं, अब जिस तरीके से नवल ने लिखा है, अगर वो लोग फॉलो करें तो देयर विल बी सो मेनी पीपल, द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, यही कहना सही होगा। पीपल वॉन्ट बी फ्रस्ट्रेटेड, रेग्रेट नहीं होगा उनकी लाइफ में। उनको मेरे ख्याल से रेग्रेट इज द वर्ड। ज्यादातर लोगों को ये रेग्रेट होता है दैट देयर इज समथिंग आई वांटेड टू डू, देयर इज समथिंग जहाँ पे मैं बहुत बढ़िया कर सकता था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे रोक लिया, या फिर गरीबी ने मुझे रोक लिया, या फिर हालातों, वही परिस्थिति हो गया, हालातों ने मुझे रोक लिया, या फिर एक्स वाई जेड रीजन, या फिर मेरी जॉब ने मुझे रोके रखा। आई गेट इट, यू नो, बट अगेन देयर शुड नॉट बी रिग्रेट। तुम्हारे अंदर वो करेज होना चाहिए जहाँ पर तुम उठो और फिर अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करो। जो लोग करते हैं वो फल पाते हैं, जो नहीं कर पाते वो रिग्रेट में रहते हैं, कहीं ना कहीं कह दे जितना भी कि आई डोंट हैव रिग्रेट्स, बट उन्हें रहता है कहीं ना कहीं अंदर अंदर। एंड लाइफ में कुछ भी हो जाए, इवन इफ यू डाई पुअर, ना ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं मतलब ये कहने वाला था कि इफ यू डाई पुअर, चाहे गरीब मर जाओ बट रिग्रेट के साथ मत मरो। थोड़ी सी ब्लंट स्टेटमेंट है, बोल्ड स्टेटमेंट है, बट आई थिंक आई स्टैंड विद इट। You should not have regrets in your life. So whenever a day starts and you think कि मैं रोज चीज करता हूँ but मुझे deeply inside I regret doing this thing, stop doing it, because वो होता रहेगा, it becomes your habit too. और जब curiosity follow करो तो I think it's a courageous thing when you follow your curiosity, because I don't know कि वो curiosity जो तुम follow करने जा रहे हो, your parents will allow it or not, your society will approve it or not, but I would say that's the game. Follow your curiosity. You will have to be in love with your curiosity, with your path, even if it's unknown, even if you know that I don't know where I will go. You must do it because you are living the life now. You are playing the game now, and you are loving it. आई थिंक यही नवल का कहना है। इसी तरीके से मैं इसे समझता हूँ। और अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप किस तरीके से देखते हैं। और मैं कहूँगा कि किताब पढ़ो, इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस और नॉट। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं तो अपने लिए ये, राइट नाउ आई एम लाइव, तो अपने लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। आई वुड से तो किताब पढ़ने से क्या होता है, एक रीडिंग और लिसनिंग, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब हम रीड करते हैं तो अलग तरीके से आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, एक अलग स्टेज में होते हैं। और अब ये तुम लिसन कर रहे हो, यू आर जस्ट लिसनिंग मी, माई आइडियाज, माई थिंग। बट व्हेन यू रीड, of course you will be reading Naval's ideas, but with Naval's ideas you will be also formulating your own ideas. And when you formulate your own ideas, I will suggest you to write it on your notebook and share that knowledge, that learnings, that insight with the people. चाहे वो लिख के ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे लिख के पोस्ट कर दो, या क्रिएट वीडियोस अबाउट इट, बट शेयर इट। दैट्स व्हाट अ सिंथेसाइजर डू। बट इफ यू डोंट वांट टू शेयर इट, इट्स completely okay. Okay, let's go. When specific knowledge is taught, it's through apprentice. I don't know, I can't pronounce this word. Not schools. Specific knowledge is if often highly technical or creative. It cannot be outsourced or automated. Now specific knowledge cannot be outsourced or automated. uh, I hope you get the thing.
Embrace accountability and take businesses under your own name. Society will reward you with responsibility, equity, and leverage. Give me a lever, give me a lever long enough and a place to stand. I will move the earth. Okay. Fortunes requires leverage. Business leverage comes from capital, people, and products with no marginal cost or replication, core and media. Founders require leverage. Business leverage comes from capital, people, and products with no marginal cost of replication, code, and media. Capital means money. To raise money, capital means money. To raise money, apply your specific knowledge with accountability. To raise money, apply your specific knowledge with accountability and show resulting good judgment. Labor means people working for you. Labor means people working for you, and it's the oldest and most fought over form of leverage. Labor leverage will impress your parents working for you. So, labor means people working for you. It's the oldest and most fought over form of leverage. Labor leverage you impress your parents, but don't waste your life chasing it. Capital and labor are permission leverage. Everyone is chasing capital, but someone has to give it to you. Everyone is trying to lead, but someone has to follow you. Think that everyone is trying to lead, but someone has to follow you. Code and media are permissionless. The code and media are permissionless leverage. They are the leverage behind the newly rich. You can create software media that works for you while you sleep. Great. So I think Naval said that if you can't code, create videos, write blogs and books, record podcasts. Why? Because there are two permissionless leverage. Basically, it means that it can make you money while you sleep. If you can code, so if you can create software that even if you will if you even if you are sleeping, it will keep making money for you, or create media basically this, like I'm creating this live video, I'm creating YouTube videos, I'm creating Instagram videos, that is media. So that is two permissionless leverage. So you need to decide that what you need to do. You can do both. If you can do both, it's like unstoppable thing. I think Varun Maya is someone who does both things. He is amazing a coder, engineer, plus he also smashing and blowing his YouTube channel. So Varun Maya is perfect example who has these both thing, code and media. Okay, when it comes to me, I think I am all into this YouTube thing, content creating, marketing thing. So I am leveraging this media, you know so that's what you should do, and I love doing it. I haven't tried coding. So जब मैंने 12th पास आउट करी थी, so I gave myself 1 year of exploring, because उस टाइम बड़ा ये चल रहा था, अभी भी है, चल रहा था, मतलब किसी, it is not trend, it is something you should follow, that after your 12th standard or after at any point of your life, if you think कि मुझे समझ नहीं आ रहा, what should I do, give yourself time to explore. तो मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया एक्सप्लोर करने का. आई स्टार्टेड विद लर्निंग फाइनेंस थिंग्स, देन कोडिंग भी सीखा, डिजाइनिंग भी, मतलब हर जगह हाथ पैर मारे. बस एक गलती ये करी कि कोई भी चीज तुम एक्सप्लोरेशन फेज में पकड़ते हो तो कम से कम उसको 4 से 5 महीना तो दो. मैंने हर चीज एक एक महीने में छोड़ी. कोडिंग 1 महीना 1.5 महीना सीखा, छोड़ दिया. और क्या सीखा था मैंने, आई थिंक मैंने डिजाइनिंग सीखने की कोशिश करी थी, 3D डिजाइनिंग 1 1.5 महीना किया, छोड़ दिया. So yeah, I shouldn't have done that too. That was my mistake. So if you are into exploration phase, give yourself time. Give yourself मतलब कि जो भी स्किल आप जिस स्किल में अपने आप को एक्सप्लोर करें, 4 से 5 महीना दो, बिल्कुल दो. ओके.
Okay. Okay. So नवल ने यहाँ लिखा भी हुआ है, if you can't code, write books and blogs, record videos and podcast. This is beauty. Judgment requires experience, but can be built faster by learning foundational skills. Okay. There are two things I follow. Number one, the execution steps, and another thing is जो भी चीज़ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है, आई हैंड राइट इट, मतलब मैं इसको बिल्कुल कॉपी करके लिखता हूँ. एंड वाई यू शुड हैंड कॉपिंग योर फेवरेट ऑथर्स राइटर्स, because it makes you a better writer. It gives you that ability to think like them, to articulate words like them. That's why you should always hand copy daily. I do it on daily basis, always do it. I'm hand copying on my page. This is interesting. There is no skill called business. Avoid business magazine and business classes. So I have never read any business magazine or business classes or business newspapers. But yeah, it's interesting to read it. This thing. Now this is something my favorite. Okay, now it's just it is execution step, another execution step, and it will take maybe years and to do these things, to learn about these things, and it will make you unstoppable. So what things Naval says to study about? Number one, it's written study microeconomics. I have written it already, but yeah, I will write it again. Microeconomics. और आगे में पता चलेगा that why microeconomics, why Naval is saying that everyone should read microeconomics and game theory, which is actually a part of microeconomics, जहाँ तक मुझे याद है. So I have studied my microeconomics in 11th and 12th standard, but again let me tell you, जो हम स्कूल की एनसीईआरटीज में पढ़ रहे होते हैं माइक्रो, ऑफ कोर्स दैट इज बेसिक्स, बट बहुत अच्छे से अगर पढ़ना है तो आई थिंक देर इज अ कोर्स ऑन MIT courseware like basics of my undergraduate course है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर. आई थिंक यू शुड गो एंड वॉच इट. मैंने थोड़ा सा देखा था जब मैं अपने एक्सप्लोरेशन फेज में था, जो मैंने बताया, बट नाउ आई एम गोइंग टू वॉच इट अगेन. Game theory, game theory, then psychology. You should psychology, persuasion, persuasion, and mathematics again, and computers. ओके. सो इसके अंदर से जो मेरे पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट कौन से आ जाते हैं? साइकोलॉजी, परसुएशन मुझे पर्सनली पसंद है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. गेम थ्योरी मैंने इतना नहीं पढ़ा है, सो आई कांट टेल कि मुझे इसमें पसंद है या नहीं. अदर देन दैट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स, सो हमें थोड़ा सा अब यहाँ पे मुझे यहाँ पर अभी हमें और समझना पड़ेगा कि जैसे आई एम इनटू दिस मीडिया थिंग, सो हाउ शुड आई यू नो and of course when it comes to business as well and media thing or YouTube thing, how should I start studying math that helps me, right? That's something.
and of course computers. So maths and computers are something I need to figure it out, that how should I study it. But yeah, it is not something like कि अभी करना है, शाम तक करना है, next day. It will take time, right? But focus on these things. Focus start. अगर इसमें आप एक भी चीज में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो it will change your life. But again, for the specific knowledge, ये वाली चीजें जब अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करेंगे, लेकिन आपके पास साइकोलॉजी है, यू नो परसुएशन, राइट, एंड एथिक्स. ओके, एथिक्स इज ऑल्सो, यू हैव एथिक्स, and you know microeconomics. Why microeconomics? Because I think, I don't know, maybe the you create, you predict the things. मैंने अभी इसको इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, बट हाँ, इन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि एक दो दिन में रिजल्ट दिखने लग जाएगा. आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेकर के चलो, बट इट वो दिखेगा दिखेगा. तो ये देख रहे हो, ये सब्जेक्ट्स अगर हम देखें, अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं बेसिकली यहाँ पर, सो नो स्कूल और यूनिवर्सिटी विल टीच यू माइक्रो इकोनॉमिक्स. उसके साथ साथ परसुएशन भी सिखा रही हूँ, और उसके साथ मैथमेटिक्स भी सिखा रही हूँ, और उसके साथ साथ कंप्यूटर्स भी सिखा रही हूँ. ये नहीं सिखाता ना कोई. मतलब कि if you want to learn microeconomics, you are into economics. If you want to learn psychology, you are into psychology. If you want to learn persuasion, I think persuasion तो मुझे नहीं पता, but then you are into sales. You are doing a degree in sales and marketing, not a persuasion degree. कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से persuasion degree, जहाँ तक मेरी knowledge है. And उसके साथ साथ mathematics and computers. So there is not कि आप इसको उस तरीके से लो जो हम 11th में हमको स्ट्रीम्स मिलती हैं. सो इफ यू आर आर्ट स्टूडेंट्स, यू कांट स्टडी मैथ्स, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू टेक मैथ्स. तो दैट्स द थिंग. वो चीज़ आ जाती कि वो शायद चीज़ चेंज होनी चाहिए. अब हम, मैं अपने आप को इतना तो अभी क्रेडिबल नहीं मानता कि मैं अपनी उसको बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज करूँ एजुकेशन सिस्टम को. बट हाँ, ये लूप होल जो हमको पढ़ते हुए मिला, क्योंकि स्टडी ही यही कह रही है कि वो चीज़ होनी चाहिए. क्या चीज़ होनी चाहिए कि वी कैन एक मतलब कि सब्जेक्ट ले सकें अपने हिसाब से. अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उसके साथ अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब कि साइंस जो भी सब्जेक्ट तुम्हें लेने हैं, लो एक ऐसा कॉम्बो बनाओ अपना विच हेल्प्स यू. हाँ, बोलना बहुत आसान है, बट हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट्स द कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, कि हम इसको सिस्टम में कैसे ला रहे होंगे. बट राइट नाउ हमारा गोल सिस्टम को ठीक करना नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, हमारा गोल लोगों को अवेयर करना भी नहीं है. हमारा गोल है भी खुद सीखना, क्योंकि जब खुद सीख जाएंगे तभी लोग अवेयर होंगे. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वांट्स टू लीड, but there is someone who must follow you. So to make someone follow you, you must become something first, then talk about it, then talk about it. Okay. Reading is faster than listening. That's why I said read. Listening right now, my you are listening me. If you are listening me, it's called so, but reading is faster. Similarly, doing is faster than watching. जो भी जब हमने ये शुरुआत किया था लाइव, उसमें भी हमारी यही बात हुई थी कि एजुकेशन इज़ वेयर यू लर्न मोस्ट. एजुकेशन में मैजिक हो रहा होता है, तो उसी के हिसाब से कि डूइंग इज़ फास्टर देन watching. For example, you are just watching videos and videos and you are not doing anything, so it means you are not learning. You should be too busy to do coffee while still keeping on uncluttered candle calendar. Just good.
So the two things, again यहाँ पे क्या लिखा हुआ, there are apply specific knowledge with leverage and eventually you will get what you deserve. So two things जो हमने अभी सीखी उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि यू हैव अ स्पेसिफिक नॉलेज, तुम उस स्पेसिफिक नॉलेज को फॉर्म करते हो, अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करते हो और उस अननोन पाथ पे चलते हो। हालांकि अभी तक नवल ने ऐसा बोला नहीं है कि अननोन पाथ है ये, आई थिंक आगे बोला हो, बट जब मैंने इस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करा तो आई फाउंड दैट इट इज़ कम्प्लीटली एन अननोन पाथ। तो जब आप उस बात पे चल रहे हो, और लेवरेज तो दो लेवरेज की बात हुई, एक परमिशन लेवरेज, एक परमिशन लेस लेवरेज। परमिशन लेस लेवरेज में कोड एंड मीडिया, एंड आई टॉक्ड दैट media is my thing right now. I'm doing leveraging media. So curiosity, specific knowledge, and then leverage. When you apply specific knowledge with leverage, you eventually get what you deserve. So start with specific knowledge, choose your leverage, and start working on yourself. And when you're finally wealthy, and when you are finally wealthy, you will realize that it was not what you were seeking in the first place. तो कह रहा है कि जब तुम वेल्थी हो जाओगे तुम्हें मालूम पड़ेगा that it was not what you were seeking in the first place, but that is for another day. Okay, but that is for another day, another day, meaning कि इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे होंगे। तो यहाँ पे नीचे समरी लिखी हुई है, प्रोडक्ट प्रोडक्टाइज योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को प्रोडक्टाइज करने की बात हो रही है। तो कैसे हम करेंगे? हम, मेरे हिसाब से मैं दो चीज़ें यहाँ से टेक अवे कर रहा हूँ। पहला है कि अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को फॉर्म करो, विच आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड। दूसरा है लेवरेज, which I think I have already started if I'm recording this video. So I am doing these two things. If you're watching it, if you are not doing these things, and not just doing, finding out how to do these things, finding out how to do two of these things, that's also a kind of starting point. We should start. Okay, quick revision, अगर कुछ छूट रहा हो कुछ important तो हम उसको देखेंगे. Yeah, there is something, learn to sell, learn to build. So जब हम जैसे persuasion की जो skills की बात हुई, persuasion की जो बात हुई, I think you learn persuasion in sales. So learn how to sell, learn how to build. Right now, I think I'm learning how to build. Actually, I think I'm learning both of these two things right now. Right now, for example, I'm talking to you, I'm actually practicing the principles of sales. Because sales, जो कि मैंने अब तक जो समझा है, मैं simple words में समझाऊं, sales is actually, education. When you are on a sales call, you are educating the people about your product, about your service. And when you educate them enough, you are able to sell them. This is something I have learned, जो मेरी सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल घोस्ट राइटिंग सर्विसेज, उसके अंदर सेल्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं उसको सीख रहा हूँ। और उसके अंदर मैंने अब तक यही सीखा है कि एजुकेट देम, व्हाई डू दे नीड ईमेल्स, नॉट जस्ट ईमेल्स, एजुकेशनल ईमेल्स। दिस इज व्हाट आई एम, इसमें क्या होता है कि हम एक एजुकेशनल ईमेल सीक्वेंस बनाते हैं, जो कस्टमर होता है, हमारा टारगेट ऑडियंस होता है, उनको भेजते हैं। दे आर दोज ईमेल्स आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, दोज ईमेल्स आर एजुकेशनल, दे आर एजुकेटिंग। सो सेल बाय एजुकेटिंग, ये वाला मतलब कि एजुकेटिंग इज द सेल। ये मैंने अब तक सीखा है, बट ऑफ कोर्स बहुत चीजें हैं सेल्स में सीखने की, पर जो मैंने अब तक सीखा मैंने वो चीज बताया। लर्न टू बिल्ड। राइट नाउ आई थिंक आई एम बिल्डिंग हाउ टू बिल्ड audience. That's what I am learning, how to build audience, how to build a YouTube channel. But when it comes to products, I have not done it. So but yeah, I have not even read any book. बट आई थिंक द बेस्ट वे, मुझे जो लगता है जिस तरीके से मैं सीख रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को कैसे बिल्ड करते हैं, वो लोगों से मिलकर सीख रहा हूँ। एंड आई थिंक वहाँ पे जो मेरा जो मीडिया लेवरेज है, उसी का उपयोग करके मैं लोगों से बात कर रहा हूँ या उनसे मिल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट विद दोज पीपल्स एंड लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम दैट दोज पीपल्स हु हैव बिल्ड ग्रेट प्रोडक्ट्स। तो लर्निंग बिल्डिंग फ्रॉम दीज दोज पीपल्स। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा भी आई थिंक इट्स ऑलवेज द बुक्स। आई थिंक you can learn anything from books. There are lots of videos. Go learn, read, execute. Yeah, but हमने बहुत सारे skills की बात करी है, but focus one at a time. For example, what I am focusing on, writing.
writing. I think Naval has not talked about writing, बट अगेन जब हम परसुएशन की बात करते हैं तो वही राइटिंग में मान लो व्हेन आई एम राइटिंग तो आई एम लर्निंग हाउ टू राइट परसुएसिव राइटिंग, परसुएडली कैसे लिखा जाए, तो ऑफ कोर्स वो राइटिंग में परसुएशन ही सीख रहा हूँ. एंड selling, so you are writing the words which sell, so you are learning also learning sales. And yeah, these two things, persuasion, sales, and of course there is kind of creativity in it, and storytelling element is also there. And of course microeconomics is not there, but yeah, but that's my specific knowledge, right? So Naval says follow your specific knowledge. My specific knowledge is will be built around writing. When it will be coupled with marketing and sales, I don't know. Again, it's unknown path. But yeah, I'm following my curiosity. Maybe the other day it make me something else, or the other next day मेरा कुछ और मन करता है, कुछ और क्यूरियोसिटी, एंड मन वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि मन जो है वो तो रोज कुछ नया करने को करता है. या जो सच में जो तुम्हारी अंदर क्यूरियोसिटी है उसकी बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच दिस वीडियो बाय पैट्रिक बैट डेविड, जिसके अंदर उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई थिंक यू शुड वॉच इट टू. कि उसने ये वीडियो बनाई थी कुछ 10 or 30 बिजनेस लेसन, ऐसे कुछ 10 बिजनेस लेसन फ्रॉम माफियाज. एंड आई वाज लाइक सो इंटरेस्टेड, एंड आई वॉच दैट वीडियो, एंड कंप्लीटली क्या मतलब कि बहुत ही मजेदार वीडियो लगी, बहुत ही अच्छे लेसन थे जिस तरीके से बताया. सो आई वाज सो इंटरेस्टेड इन नाउ रीडिंग माफियाज, हाउ दे रन बिजनेस, हाउ दे थिंक, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो. ये अभी भी है, मतलब कि अभी तो मुझे पता नहीं चला है, बट हाउ आई डिड इट एंड हाउ आई एम प्लानिंग to read mafias, and not just read, I want to just think like them. And the best way to think like them is to read them. And to read them, I just went to ChatGPT, wrote a simple prompt that gave me the books, mafia books from which I can learn business. And there were books. And there उसमें से एक बुक थी जो खुद ही एक माफिया ने लिखी थी. ही वो जेल भी गया था, लाइक यूएसए का ही है. वो जेल भी गया था, जेल से आने के बाद, एंड उसका बचपन भी वहीं बीता था अराउंड माफियाज फैमिली, एंड उसने भी बहुत कुछ गलत किया था, जेल काट करके आ गया था, एंड फिर उसने वो किताब लिखी थी. तो I was so fascinated. I was so interested in reading that thing. So look, ये चीज की मैं बात कर रहा हूँ. जैसे मैंने उसको देखा, क्यूरियोसिटी पीक हुई कि मेरे को माफियाज पढ़ने, and I will read it. I have not read it, but I will read it. So now no college, no university will tell you how mafias think, will tell you how mafias work. So you will learn it. तुम देखा, सिखाया नहीं जा सकता लेकिन सीखा जा सकता है. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया. Okay, summary says, it's written, I think बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है. Your summary says productize yourself. What does that mean? Let's read it. Productize and yourself. Yourself has a uniqueness. Productize has a leverage. And I think यहाँ पे लिखा हुआ है productize and productize yourself. Productize and yourself. Yourself has a uniqueness. Productize has leverage. So I think जो uniqueness है वो है हमारी specific knowledge. I am even writing it on. I'm on my notebook as well. Specific knowledge. Okay. And uniqueness हो गया. Okay. Productize मतलब हमारा क्या हो गया, लेवरेज, जो कि मीडिया एंड कोड हो गया. Yourself has accountability. Productize has specific knowledge. Okay. Yourself also has specific knowledge in there. Okay. Yourself, okay. Yourself also has specific knowledge in there. So all of these pieces you can combine into these two words. Productize yourself. That is specific knowledge and leverage. If you are looking toward the long term goal of getting wealthy, you should ask yourself, is this authentic to me? If you are looking toward the long term goal of getting wealthy, you should ask yourself, okay, is this authentic to me? Is it myself that I'm projecting?
Okay, I am scaling it. I am scaling with labor or capital or with code or with media. So it's a very handy, simple mnemonic. Now this paragraph is something मैंने कहा था ना कि कुछ कुछ पैराग्राफ्स होंगे जहां पढ़ कर के आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे होंगे। कुछ कुछ ऐसे पैराग्राफ्स होंगे जब आप किसी भी तरीके की किताब पढ़ रहे होंगे जिसको उस पैराग्राफ को आप बार बार पढ़ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल टू मी दिस पैराग्राफ इज समथिंग आई वांट टू रीड अगेन, मे बी अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल आई गेट इट। जब गेट इट होने लग जाएगा यानी समझने आने लग जाएगा देन आई विल हैव माय ओन आइडिया। सो समझना बहुत जरूरी है किताब को, चाहे वो ये खत्म कब हो हमको नहीं सोचना है, हमको नेक्स्ट लाइन का सोचना है। वी नीड टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट लाइन, दैट्स इट। इफ यू आर लुकिंग, चलो मैं पढ़ पढ़ भी देता हूँ फॉर यू गाइस। If you're looking toward the long term goal of getting wealthy, you should ask yourself. If you are looking toward the long term goal of getting wealthy, you should ask yourself, is this authentic to me? Is it myself that I'm projecting? And then I'm productizing it. Am I scaling it? Am I scaling with labor or with capital or with code or with media? It's a very handy, simple mnemonic. यानी कि इज दिस ऑथेंटिक टू मी, इसका मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ या जिस तरीके से मैं लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहा हूँ गेटिंग वेल्थी का, तो आई थिंक जो भी मैं कर रहा हूँ वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है, इज दिस ऑथेंटिक टू मी, इज इट माई सेल्फ दैट आई एम प्रोजेक्टिंग। और उसके बाद क्या मैं उसको प्रोडक्टाइज कर रहा हूँ, क्या उसको बढ़ा रहा हूँ और किससे बढ़ा रहा हूँ, क्या लेवरेज यूज कर रहा हूँ, कैपिटल कोड लेबर क्या चीज़ यूज कर रहा हूँ, ये चीज़ पूछने की है। तो आई थिंक इसके अंदर से इज दिस ऑथेंटिक टू मी, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। I think right now, for example, this video is my media. I'm practicing how to speak, how to create videos, how to go live. I think this is my first live on YouTube. And जल्दबाजी में किया, मतलब एकदम बैठे बैठे आइडिया है, so I am doing it. I think yeah, it feels authentic to me. Is it myself that I'm projecting? Yeah, I am. Am I productizing it? I'm learning how to productize because I'm learning my specific knowledge and I'm learning how to productize. And my leverage is media. So yeah, सुनने में ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा फिगर्ड आउट नहीं है। मैं इसे सुनने पे मेरी जो ये भी मैंने कुछ चीज़ें जो खुद से बोली, इससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है पर बहुत चीज़ें भी फिगर आउट करनी बाकी है, सोचनी बाकी है। यार एंड यही तो दिस इज़ द ब्यूटी एंड ऑफ को ओके, नाउ आई थिंक जो चीज़ मैंने अभी तुम्हें कही थी, वही कहीं न कहीं नवल ने भी कही एंड आई एम ऑनेस्ट, आई एम बीइंग ऑनेस्ट कि मैंने नवल को पहले सुना है पॉडकास्ट पे, बट आई हैव नॉट रेड हिज वर्क एंड ये बात सेम ही निकल करके आई है जो भी नेक्स्ट लाइन है व्हिच आई एम गोइंग टू रीड यू गाइस। दिस इज हार्ड, दिस इज हार्ड, दिस इज व्हाई इट टेक्स decades. I'm not saying it takes decades to execute, but the better part of a decade may be figuring out what you can uniquely put up. Yeah, that's what I said. They're figuring out. ऐसे ना कि figure out नहीं मालूम पड़ता है कि क्वेश्चंस का नहीं, मैं तो ऐसे, so that's why जब मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा तो this was important paragraph. Okay, if you have book, so it's on 38 page number. And of course, if you are watching, कभी भी तुम ये देख रहे हो, and if you're liking this conversation, and if you want कि यार मैं मतलब मैं भी पढ़ूंगा किताब या फिर लाइव देखते हुए पढ़ूँ, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ दिस थॉट कि मैं वीडियो ऑन करके या लाइव जब भी तुम देख रहे हो वैसे पढ़ूँ, so take a book with yourself, pause this video, read the book, then again watch it. Okay, okay. This is hard. So it takes decades. Now, आज हमने काफी अच्छी चीजें सीख ली, काफी तरीके वाली चीजें सीख ली हैं कुछ। सो बट अगर आप ये देख रहे हो तो आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि जाके फिगर आउट करो, देखो कि व्हाट यू वर इनटू एज अ किड एंड नाउ यू रियली लाइक वाचिंग दिस थिंग, यू रियली लाइक डूइंग दिस थिंग।
प्लान करो इसको, मैं अपनी ये जो क्यूरियोसिटी इसको परस्यू कैसे करूंगा। एंड रिमेंबर व्हेन यू स्टार्ट परस्यूइंग, ऐसा हो सकता है कि मे बी यू विल फाइंड इट कि ये मेरी क्यूरियोसिटी नहीं है। इट्स ओके, यू विल only know by trying, you will only know by pursuing. So go and pursue and find out what leverage you want. If you want to do coding, if you want to code, go and learn coding. If you want to, use media, go and learn this content creation, record videos, create podcast. And if you are not okay, many people, जब भी मैं ऐसी बात करता हूँ मेरे दोस्तों से, सॉरी, जब भी मैं ये बात अपने दो सॉरी जब भी मैं बात अपने दोस्तों से करता हूँ कि गो यू शुड क्रिएट वीडियोस, ये कंटेंट है, सो दे से दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई एम नॉट। एंड इट्स कंप्लीट, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, बट यू कैन स्टार्ट विद रिटन पोस्ट ऑल्सो। मेरी एक गलती ये भी थी, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन, मैंने ना लाइक 6-7 महीने इंतजार किया था, आई डिडंट हैव अ गुड फोन। तो मतलब कि कैमरा फोन का अच्छा था ही नहीं, तो मैंने इंतजार किया कि कब मेरे पास मतलब कैमरा आ जाएगा बढ़िया सा, फोन आ जाएगा, वैसे कैमरा नहीं। तो 6 महीने तक कुछ भी नहीं क्रिएट किया, कंज्यूम ही कंज्यूम। सो वो भी एक मिस्टेक थी, आई शुड हैव स्टार्टेड द रिटर्न पोस्ट, आई डिडंट। सो ये चीज़ है कि तुम रिटर्न पोस्ट से स्टार्ट करो। अच्छा चलो, तुम्हें कैमरा से दिक्कत है, तुम्हें अपनी वॉइस से तो दिक्कत नहीं होगी, रिकॉर्ड जस्ट वॉइस यार, वॉइस के पोस्ट बना के डाल दो। नाउ देर आर टन्स ऑफ एआई टूल्स, यू जस्ट सर्च इट। So there are lots of ways now to create content, to learn how to create content, to do whatever you like, whatever do you love and earn money. So you should do it. So these two things हमको समझ आ गई, स्पेसिफिक नॉलेज बाय फॉलोइंग क्यूरियोसिटी, लेवरेज, एंड अदर थिंग कि ये फिगर आउट करने में टाइम लगेगा, लेकिन द बेटर पार्ट ऑफ टिकट मे बी फिगरिंग आउट। क्या फिगरिंग आउट करना ही इंपॉर्टेंट थिंग हो जाएगा, मतलब फिगरिंग आउट करना ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम यूनिकली क्या प्रोवाइड कर सकते हो टू द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, when I asked to myself that what I really want to do, what I really like to do, I think I like speaking, I like telling stories, I like writing, और ये सब निकल के आता है that I should do stage shows because उन लोगों से connect होना। तो I think the stage shows is something that I would love to do। ये बात मुझे पता चली जब मैंने इस चीज को सोचा कि ओके व्हाट्स माय थिंग, दिस इज माय थिंग, मे बी आई शुड डू अ स्टेज शो, मे बी इट विल वर्क और मे बी इट विल नॉट, बट अगेन it's not going to be easy, it will be hard। So how I will do it, I am also getting started with you guys, I am going to do it, I think it's on 10th January। I will also record a podcast or a vlog kind of thing। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि वहाँ पर ओपन माइक है, वहाँ पर जाकर के वी कैन टेल आवर स्टोरीज़, वी कैन टेल पोएट्रीज़ और डू स्टैंड अप कॉमेडी। आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी इज़ मच मोर हार्डर फॉर मी राइट नाउ। आई विल लर्न इट। फॉर नाउ आई थिंक आई विल टेल अ स्टोरी ऑन स्टेज on 10th January. Uh, January? Feb. 10th February. Yeah. So this is how I will do it. Let's see how it goes. So this is something. So वो uniquely जो आ रहा हो, जैसे for example I have so much interest in learning finance, stock market, investing and specifically investing। बट हाँ थोड़ा बहुत मेरे को मतलब ट्रेडिंग भी मैंने सीखी हुई है, तो वो थोड़ा सा है क्यूरियोसिटी कि उसमें क्या चीज़ होती है, उस चीज़ को भी फॉलो करना है। जब तक 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 इतनी सारी चीज़ें देखी, जो स्टेज शोज लाइक दिस मार्केटिंग थिंग, रीडिंग थिंग, मार्केटिंग वाली थिंग, राइटिंग एंड and poetries and stock market investing। सो अबाउट टीचिंग, आई लाइक टू टीच। सो ये सब जब मिलके एक कोई चीज मिलके जब कंबाइन होकर के आ रही होगी एक साथ, तब जादू होगा, तब मैजिक होगा, तब तुम्हें पता चलेगा तुम क्या यूनिकली प्रोवाइड कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन जस्ट वन डे। यहाँ पे लिखा हुआ है इट टेक्स डेकेड, बट ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट इट टेक्स डेकेड टू एग्जीक्यूट। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू डू अ स्टेज शो, गो ऑन अ स्टेज शो, डू इट, कल ही कर सकते हो तुम जाके। इवन तो 10 फरवरी को पूरा ओपन माइक है बाय कॉम्यून। एंड आई वेटेड फॉर कॉम्यून बिकॉज इन सेप्टेम्बर, जो मेरे बर्थडे के अराउंड लास्ट ईयर, मेरा मन था कि मैं करूं इसको, पर मैं कर नहीं पाया, मैं गया ही नहीं बिकॉज आई थॉट दैट आई शुड नॉट, वही कि अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो नहीं करी और उसको जाने दिया। बट अगेन अब फिर से वो मोमेंट आया है। कॉम्यून ने इससे पहले 1 मिनट करा था, 1 मिनट मुझे पसंद ही नहीं बिल्कुल भी। और उससे पहले नोएडा साइड किया था, तो वो बहुत दूर हो जाता। बट नाउ इट्स इन लाजपत नगर, टोट स्टूडियो, आई थिंक TOT स्टूडियो, ऑन 10th Feb। I'm going to perform there. I'm going to perform there just to find out my curiosity, where I think.
मतलब मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, वो वाली चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। सो तभी ऐसी चीज़ फाइंड आउट करते रहोगे, देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल नो दैट व्हाट यूनिक कैन आई प्रोवाइड। Maybe what unique can I provide? For maybe I will become a good writer, writer for the movies and songs, and with it I will मैं जैसे कि मेरे I'm into market learning, marketing, sales, persuasion, and sales. So maybe I will be investing in companies, or for building my own products, or I am into teaching, so maybe I'm coaching people. I don't know, it's an unknown path. It's just curiosity which is there. So yeah. What is the difference between wealth and money? ओके, सो दिस वाज फर्स्ट डे। सो इसको मैं, हालांकि ये जो लाइव है ये मैंने जैसा कहा था कि 3 से 4 से 7 बजे तक चलेगी रीडिंग नवल। 4 से 7 भी चल सकती है, 4 से 6 भी चल सकती है। तो आई थिंक 6 बजने वाले हैं, लाइक इन दिस 10 मिनट। तो मैं अगला टॉपिक, अगली रीडिंग स्टार्ट नहीं करना था, बिकॉज आई वांट टू जस्ट थिंक ऑन दिस। और अगेन कि यहाँ पे रीडिंग खत्म होती है, बट यहाँ से व्हेन यू क्लोज योर बुक, योर थिंकिंग स्टार्ट्स। अब वो आप चलते फिरते कभी भी सोच सकते हैं, यू आर ऑलवेज थिंकिंग। So if you are in washroom, if you are cooking, if you are going for run, if you are walking, if you are doing anything, you can think about these things, how to figure it out. So ये पार्ट में अभी आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाहता, है नेवर गो अहेड इफ इट्स अबाउट थिंकिंग। सो मैं अपने आपको कुछ टाइम थिंकिंग को देना चाहता हूँ, और अभी नहीं देना चाहिए, थोड़ी देर टाइम, मतलब कि शाम को दो, क्योंकि अभी तुम इसी से थोड़े परेशान परेशान तो नहीं, कि अभी इसी से चारों तरफ यही है जो भी हमने थॉट्स पढ़े। तो इसलिए तुम आउट ऑफ द बॉक्स, शायद मैं अपनी बात करता हूँ, मैं नहीं सोच पाता अभी इतना, बट मैं खुद को टाइम देता हूँ, उसके बाद सोचने की कोशिश करता हूँ। तो रीडिंग टाइम अभी खत्म नहीं हो रहा है, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा और फिर इसे रीड करूंगा। बट आई एम एंडिंग द लाइफ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, एंड इसलिए फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा ही बोला, बट इट विल लाइक कंप्लीटली बोरिंग लाइफ्स वेयर आई विल जस्ट रीडिंग एंड शेयरिंग व्हाट आई थिंक, माय व्यूज एंड राइटिंग। And of course, so what's the intention of recording live? It's just to make myself better, is to just record and document my journey, is to, and again, it will help me in my content creation too, because I will be able to, cut out the clips out of this live. So that's an amazing benefit. So, okay, guys. So I think we can end the live.